Hello everyone, this is Advocate Radhika Sharma, legal advisor at Lexis and Company. So today we're going to discuss the Article 33 of our Indian Constitution and इसका प्रोविज़न क्या है एंड इसके क्लॉजेस क्या बोलते हैं. बेसिकली जो आर्टिकल 33 है हमारा क्या बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, we're going to discuss in this video. दो आर्टिकल 33 इज उसमें पावर है ऑफ पार्लियामेंट की टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस और एक्स्ट्रा. तो आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट सेल इन देयर एप्लीकेशन to the member of the armed force or the member of the force charged with the maintenance of public order or person employed है in any bureau or other organization में established by the established by the state for purpose of intelligence or counter intelligence and a person employed है in or in connection with the telecommunication system set up for the purpose of any force, bureau or organization referred in clause A and C में like a member of the armed force and the person employed in any bureau or organization established by the state restricted रहेंगे और abrogated so as to ensure the proper discharge of their duty and the maintenance of discipline among them. एंड ये जो आर्टिकल था इज अमेंड हुआ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1984 में जो आया था. So that's all for today, and if you have any query regarding this article, regarding any legal topic, you can comment us in our comment box. So that tab tak ke liye that's thank you guys, thank you for watching us. Be safe and